Am I audible? आवाज आ रही है मेरी? Yes. जी, we can hear you. Yes. All right. It's an amazing to have you all over here one more time. Hello, Falak. How are you? Things are good at your end? I'm good. How are you? Things are different. Not as we have planned. क्योंकि 2020 का विजन हमें याद पड़ा 20 साल पहले कंपनी ने सोचा था 2000 मिलेनियम के टाइम पे that 2020 will going to be the year of change. This is we are. Here we are. You can see it's still change. It's Yeah, still change. It is because I was actually going through a few of the articles and we कह रहे थे कि जो technological digitalization है उसमें सबसे बड़ा contribution किसका है? Chief IT officers का, CEOs का, C-suite leaders का. So they were like no. So the biggest impact what has been created in creating and transforming the digitalization that's a virus, unfortunately. So yeah, I mean, months back we never thought that we can actually do the work through such kind of a distancing, but here we are. So the change is apparent. And it actually is. So, Mr. Yasser, how are you? I'm good. आप बताइए कैसे हैं आप? I'm actually missing the cholas and the murg chole over here. I'm sure you're having a lot at home. आप निकलते नहीं हैं, हम तो मुर्ग छोले और ये चीजें खाने कराची आते हैं यार. जितना अच्छा खाना हमें कराची में मिलता है, इस साइड पे नहीं मिलता. Let me tell you. Yeah, over here, I mean, yeah. अगर आप कॉफी और जो स्किम मिल्क बेस्ड स्नैक्स जो है वो खाने पे मुझसे रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता. मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं. But thank you. Pleasure to have you over here. And Mavish Shafiq, Miss Mavish, how are you? कैसे हैं आप? Things are smooth, pretty jovial at over here as well. Okay, so our fourth panelist. So we have guys. Before we proceed further, okay, I can see that more and more participants are actually joining in. First off, I would like to acknowledge Team Murtafiya, Basla, and Asma for actually pulling this off, this initiative during the period of pandemic. So definitely, it was actually in the pipeline that we have to put some initiative. But thank you so much for initiating this particular session at this particular crucial time. So guys, थोड़ा मैं platform से rest आप लोगों को बता दूं कि how exactly we will going to carry this whole thing forward. I can see a lot of participants are coming in. So this session will going to be around 1 hour, and the 40 minutes will going to be 45 minutes will be dedicated for the Q&A. And my role is more of a moderator over here. So we have a distinguished guest from across the fronts, ladies and gentlemen, from the practice, from NLP, from academia, from research. So we can have an input from multiple dimensions and spheres over here. The majority of the questions are actually parted in two dimensions. Number one, what we can do on an individual level, and how exactly this thing will going to affect us on a societal and on a macro level. So before we proceed further, I also request all our distinguished participants who have joined us that please jot down the points, because at the end you will be having an opportunity to question. So here we proceed further. Okay, so starting up with the introduction. First off, मैं जरा ये एक preamble set कर दूं किसकी जरूरत क्या पड़ी थी. This year so far is no less than the Jumanji game for all of us. Every month we are coming up with something new. Abhi मैं खबर पढ़ रहा था, because the chances are that by the end of 5th or 6th May, there is a high probability of a heat wave as well. And there is another low-cost attack, उसकी भी possibility है, वो जो बड़े मच्छर होते हैं. So chances are that we are again going to witness that as well. I remember I was going to Sharai Festival to my office सुबह के टाइम पे, तो एक बहुत बड़ा झुंड नजर आया था ये लो कॉस्ट का. So काफी सारे लोग अपनी गाड़ी पार्क करके उसकी वीडियो बना रहे हैं. And I was like, look at the priorities, what do we have right now at this point in time. But nonetheless, here we go. Call. It's the nature's call, and it triggers us. Because हमारे एक तो मसला पता है कि हमारे को मुसीबत आती है ना, तो नहीं पता चले, खबर पता चले, हम उसको ढूंढने निकल जाते हैं, कहाँ है, नजर नहीं आ रही है.
because those who are actually in Karachi and they are very fond of going to the sea view, तो वहाँ पे अक्सर बैन लगता है usually दिसंबर और नवंबर के टाइम पे, क्योंकि लहरें आपकी काफी ज्यादा ठंडर हुई भी होती हैं। तो वहाँ पे अक्सर मना कर दिया जाता है कि जितने भी लोग हैं वो सी व्यू के पास ना जाएं। तो बकायदा एक्सक्लूसिवली लोगों को देखा सुबह 5 बजे फजर पढ़ने के बाद, ताजुद पढ़ने के बाद जाएंगे वहाँ पे देखने के लिए, कहीं कहाँ है नजर नहीं आ रही। Don't listen. Yeah. Take to follow rules. It's quite unfortunate, but again, I think it's what we can say. I think we are the most rebellious nation and the most resilient nation. So it's a very weird kind of a combination that we carry in our DNA. So proceeding further, I think Mr. Yasir will be joining us in a while, but nonetheless, okay. Ladies and gentlemen, here we proceed further with a formal introduction of our distinguished guests, starting off with Ms. Falak Zara Mohsin. Falak has been associated with a lot of institutes as well, in a capacity of researcher, in a capacity of a trainer, consultant. As a profession, she is an experienced psychologist. She's also a senior lecturer and has been working with the higher education industry for quite a long time. Other than that, she's also skilled and competent in psychological assessments, Microsoft Office, curriculum development. That's the need of the time at this point in time. And qualification-wise, she's an MPhil in industrial and organizational psychology from Institute of Business Management. So Falak, pleasure to have you over here. One more time. Thank you. Thank you. You're welcome. Okay, the next panelist we have is Miss Ayla. Am I pronouncing it right? It's Ayla? Absolutely. It's Ayla. So Miss Ayla Faisal, she's a behavioral coach at Aga Khan University Hospital. So we have someone from the healthcare and from the social development sector as well. She's a practicing clinical psychologist, and she's also an MPhil in clinical psychology from Institute of Clinical Psychology, University of Karachi. She has trained many myriads of participants in the domain of psychological assessments, psychotherapy, counseling, and research, possessing a strong oral and written communication. And that's exactly what the key strengths of Ayla is. Ayla, pleasure to have you over here. Thank you. Okay. Next, we have Miss Mavish Rafiq. So Mavish is actually the area of expertise of Mavish is psychotherapy, assessment, career counseling, counseling in general as well. And one thing that actually distinguishes Mavish is she is an NLP practitioner, neuro-linguistic programming. I try to actually explore this particular subject, but still there is a lot more that we can know and learn about this particular domain as well. So she has been associated with a lot of with the public sector as well. She has worked with a lot of organization affiliated with Federal Ministry for the Department of Council, Skill Development Council. And Mavish, Ms. Mavish, pleasure to have you over here. Great to see. Yeah. The fourth panelist, I think he's not yet here. He joined us, but somehow maybe he's disconnected, but he will be joining us in a while. Mr. Yasir, oh, you're here. Yes, I'm here. Oh, you're here. Okay. Maybe the name was not visible. Okay, Mr. Yasir is here. Okay, Mr. Yasir is a behavioral economist. He's a behavioral economist. He is a mental and occupational health expert, a trainer, C-level coach, and a clinical psychologist. He has been working on a lot of fronts, predominantly working on the subject of work-life integration. So not a work-life balance, but a work-life integration, the amalgamation, and also bringing the wellness at work. Mr. Aftab holds a master's degree in organizational psychology with a distinction from National Institute of Psychology, Quaid Azam University, Islamabad. And he is also an MS in clinical psychology. And right now he's pursuing his PhD from NAMAL. So Mr. Yasir, pleasure to have you over here. One more time. Thank you very much. Thank you very much. It's a pleasure to be here. Okay. So now the introduction has been done. Our team is, and all the participants, we have a message from someone. Okay, you're here.
somehow or the other, on an organization level, on an individual level, on a societal level. In fact, if we talk about the economic capital as well as the social capital, this has been disrupted. कभी किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था that oil prices will going to be operating on negative. Yeah, Tesla has lost around $14 billion yesterday, 2 days back. So the pandemic is actually not only creating an impact on the economic capital, it is also creating a significant impact on the social capital as well, on the lives of each and every one of us. So there is a kind of uneasiness what we are living in right now. So there's uneasiness, a lot of questions, a lot of new questions are bubbling up in our mind that how exactly this thing will going to resume, and how exactly once this is resumed and things will going to be different once we will be back to our own life. So starting up with Mr. Yasir Masood. Mr. Yasir, keeping whatever the COVID-19 has given to us, what in fact has snatched from us, what do you think are going to be the core psychological impact on the lives of the people, and what exactly they have to do so that they can actually preserve that element of anxiety at this point in time, that rush? अच्छा, बिल्कुल अगर मैं एक लफ्ज में आपके सवाल का जवाब दे, that one word would be acceptance. हमें जो being practitioner जिस aspects को हम देख पा रहे हैं अभी, am I audible? Because I can't see myself over here. Yes, you're audible. You're audible. Okay, and I'm visible as well because I'm not visible to myself. Pretty much, absolutely. Okay, so acceptance it is. When we talk about acceptance, unforeseen, unanticipated, and unimaginable. These are few adjectives which define the scenario all of us are going through. So we have to accept that this is something which we have. मैं कल एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट पढ़ रहा था जो जैक मा से एट्रीब्यूटेड है. आजकल ये भी नहीं पता चलता कि लोगों की स्टेटमेंट्स पर एट्रीब्यूट हो जाती है. But that statement was very interesting. And in this statement he said, in 2020 your business objective should be to survive, to live. And if you are able to meet this objective, please keep in mind that you made a good profit. Hello. Mr. Yasir, yes, you're audible. Okay, so it is important that we accept what is happening. After acceptance, we have to have access to the right information. सबसे ज्यादा जो परेशान कुन सूरत हाल जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है इस वक्त, वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड है या एक्सेस टू ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन है. क्लटर है बहुत ज्यादा हमारे इर्द गिर्द उन मालूमात का जिनकी हमें जरूरत ही नहीं है. और एट द एंड ऑफ द डे याद रखिएगा कि जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं, जब हम ट्रॉमा की बात करते हैं, तो बेसिकली हमारी सेंसरी परसेप्शंस और हमारा सेंसरी डाटा इवेंचुअली हमारी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज और साइकोलॉजिकल हेल्थ को डिटरमिन करता है. अब अगर हमारे सेंसरी डाटा में इट इज ऑल मॉर्बिडिटी, if it is all a lot of fake news coming up, and we are just bombarding ourselves with a lot of things which we are not supposed to know at all because they are of no use to us, eventually we will get ourselves distressed with this unneeded sensory data, and eventually we will find ourselves vulnerable to stress and trauma which we are experiencing in general. So accept it's a situation unforeseen and avoid unnecessary information coming to you, purge that and just filter that, unclutter that. That's very coherent, Mr. Yasir. So if I can pick out the key nuggets, the learning nuggets from whatever
from what the preamble what you have given. So number one is the acceptance. कि जो हालात है उसको जरा हजम कर दीजिए पहली बात तो ये, because this is the new normal, and because chances are new normal, and we don't have to slip into the new abnormal, in fact. So for that, the right prevention what we can do right now is to accept and be very shrewd about what information do we need to load to our mind and what do we have to discard. You are so right. You just summed it up so aptly. Yeah. Okay. So with that similar, the base which has been established for the pandemic stress discussion, psychology wants to help you, wants to help all of us. I would like to question Ms. Zera, the psychologist and the counselor. We have collaborated before, so I expect a similar kind of a verb and energy. Because right now, a lot of new things are coming in. आपकी मुझे एक बात पिछली बार की भी याद है कि हम लोग हर चीज को एंजाइटी का लेबल दे देते हैं या डिप्रेशन का लेबल दे देते हैं. Why? Maybe because we are not clear in our own vocabulary. तो हमारे पास चूंकि कफील किस्म की गुफ्तगू नहीं है, ठीक है, खसीस किस्म की है, लिमिटेड है, तो हमें हर चीज वही नजर आती है. ठीक है, अब हमें पता नहीं है सर में दर्द हो रहा है, बेटा डिप्रेशन है, कुछ नहीं होता, सो जाओ ठीक हो जाओगे. ठीक है, कुछ और है, डिप्रेशन है. ठीक है, so we label because that's the one word we have learned and we are typecasting it to every single thing, unfortunately. So keeping that thing in consideration, how exactly we can protect our mental health? Physical health is a different domain altogether, but how exactly we can ensure the mental hygiene intact during such kind of situation, जहाँ पे आप अपने कमरे या डाइनिंग रूम से बाहर कहीं और जा ही नहीं रहे. You are not having any other space to vent out. So how exactly we can sustain our mental hygiene? Okay, can you hear me? Yes, Palak, we can hear. All right. How can we? I think like Mr. Yasser just said, that what we first need to do is acceptance. Acceptance is part of mental hygiene. It's part of your mental health. That we know that we are going through this and we are not alone in this. You know, it's something like we are part of the same, we are in the same storm. Everybody, the whole world is in the same storm right now, right? So the first step is definitely acceptance. And then once you've accepted it, there's a lot of... okay, I can hear some other people. But okay. Sorry. UFO. But there is a news that UFO bhi nazar aaya US ke andar. Right. So, okay. Sorry. Coming back to your question. Yes, acceptance. And of course, the fact that now we, the acceptance that we are living in a very uncertain times, right? Uncertainty hamare all around us hai. It's uncertainty about our work. It's uncertainty about jobs. It's uncertainty about who will contract, who will be the next person I hear that has this, COVID-19. Who's uncertainty about everything, literally. So uncertainty at any case causes us stress and anxiety, because humans, what I understand is that we want some control in our life. We like having some control. We like knowing that, acha chalo, maybe not in the next 10 years, but at least I know where my next vacation will be. I plan that out. I know what my next day, the things to do ki list, we have a tendency of writing those. So we have a way of, routines and planning our next day, planning our vacations, planning the next month. कुछ हद तक planning हमारे लिए बहुत important होती है. कुछ हद तक routine हमारे लिए बहुत important होता है. And all that suddenly went somewhere down the drain, unfortunately. जो भी plans थे भी, कुछ लोगों के, December में शुरू कर देते हैं कि अच्छा, बच्चों की वेकेशंस आएंगी जून जुलाई में तो हम लोग ये करेंगे, वो सारे प्लान्स भी सारे खत्म हो गए. So there's a lot of this whole uncertainty gripped us as something that was, of course, it was so new. It was something we didn't know what to do about. तो हम लोग को initially, तो I would admit कि बहुत anxiety हुई, right? With time, with a lot of articles that we read, with a lot of things that are going on television, etc., कुछ grasp भी आया है. कुछ understanding आई है how to deal with these things. उसमें you said physical health keep aside, but I'm going to say physical health is a part of your mental health as well.
I think when you said that we've met before in the last also panel, we discussed physical as well as mental health in one panel, jo aap logon ka second panel tha. They both go hand in hand, right? So first step that I would say is that one thing that we need to look into is कि भाई, if I'm feeling, look inwards. एक self check होता है that you should try to do. If I'm feeling anxious or if I'm feeling uneasy, I don't understand what I'm feeling. Ask yourself, okay, is it something that is happening in my body? Is it an emotion? क्या हो रहा है मुझे? Try and see if you can understand that. If you can understand that, if my heart is racing suddenly or I have butterflies in my stomach because I heard some news, okay, then we can practice to deal with that, right? Either relaxation techniques hoti hain ya jo bhi ho aapka method ho, bahut sare methods we can use. When I said that uncertainty ho gayi hai, so I would definitely, one thing I would say is that routine establish kare, because like I said, we have lost a lot of control in our life. The routine helps us bring back some amount of control. मैं ये नहीं कहूँगी कि सारा control वापस आ गया, but some amount of control. I know that, like I'm going to reiterate कि news को आप limit करें, budget करें. मैं तो word use करती हूँ, budget your news. If I wake up in the morning or when I'm right after my breakfast, I listen to news, and then I will not listen to it for the rest of the day. And maybe शाम को, but not close to bedtime. Again, मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि not close to bedtime, because फिर हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को anxiety, after hearing news, we all feel anxiety कि इतने लोगों को आज हो गया, and this many people died of it, and this happened. So we are again exposing ourselves to some amount of anxiety. So when you're budgeting your news, you also have to plan it in such a way कि मुझे नींद भी अच्छी आए. तो मैं close to my bedtime news नहीं सुनूंगी, right? So छोटी these kinds of measures, routine आप fix करेंगे तो आपका control आएगा, क्योंकि I'm going to wake up every day at this time. For me, I would say I'm a night owl. I love set up my routine in this way कि चलो मैं रात को इस time पे अगर सो रही हूँ तो morning, I'm not waking up exactly in the morning, maybe around 11, which is okay. But then I have a routine that, okay, after 11, this is what I do, this is how I proceed with my day, this is what the time I spend with these people, etc., etc. So एक आपका sense of control वापस आ रहा है, और उस routine में अगर आप अपने लिए physical activity शामिल करेंगे, that will definitely help, right? Because physical activity again हमारे mind में, हमारे brain में कुछ chemicals release करती है that actually help combat stress, right? और मतलब I'm going, but I don't know if you've heard of the fight and flight response. ये बहुत common हो गया है हमारे. मैं ये example I think अपने article में भी दिया था, जो मैंने actually एस्पा के साथ share किया था, was that when we are faced with, if I'm in a burning building, for instance, my fight or flight response is activated because I'm anxious, I'm scared, and I want to escape that burning building. Now, escape from a burning building is possible because I know this is the dangerous part, and I want to escape it. But when we look at this coronavirus, this COVID-19, it's escape इससे कैसे है कि आप अपने आप को घर में बंद कर दें. And this relative of mine who was a retired Navy officer, he literally told me कि I've seen the wars of Pakistan, and और मुझे ये है कि wars के time पे आपको सामने दुश्मन नजर आ रहा होता था, और मुझे पता था कि मुझे इससे escape करना है, या मुझे इसको गोली मारनी है, या इससे मुझे इस बंदे से मुझे tackle करना है. यहाँ पे तो मुझे वो नजर ही नहीं आ रहा किससे मुझे टैकल करना है, मैं क्या करूं? He's a really old man. He's closing to 90s में है शायद, and he's like, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे टैकल करूं, फलक मैं परेशान हो गया हूं. I think he's my very loved person, and I'm like, he's telling me these stories of the war and everything. He's like, at least मुझे पता था मैं किससे डील कर रहा हूं या क्या हो सकता है. एंड कोविड में हर दूसरे दिन फिर न्यूज में आप सुनते हैं कि इसका एक नया सिम्टम आ रहा है, या इसका ये नया इफेक्ट है कि ब्रेन पे भी अब इफेक्ट कर रहा है, या माइक्रो क्लॉट्स हो रहे हैं. तो ये सारी चीजें हमारी एंजाइटी फिर से बढ़ाते हैं, और हमारा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिवेट होता है. और इसके लिए हम, आई एम श्योर आयला एंड महविश विल आल्सो टेल यू डिफरेंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स. वी आर ऑल ट्रेन्ड इन हेल्पिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स. प्लस मैं ये कहती हूँ कि लाफ्टर, म्यूजिक, ये चीजें आपके स्ट्रेस को कॉम्बैट करती हैं. और म्यूजिक ये जरूरी नहीं है, रिदम मीन्स, रिदम से मेरा मतलब है कि जरूरी नहीं है कि आप गाने सुने. रिदम हमारे रिलीजन में भी है, जब आप सूरत पढ़ते हैं,
हम हर रिलीजन में है, जब भजन सुनते हैं हिंदुइज्म में वो भी रिदमिक होता है. तो that helps our body, it relaxes our muscles. So the idea, I think, along with achieving a routine, is कि अपने लिए identify what helps you relax and then use those techniques in your life. Yes, I admit, घर पे बैठे हुए, we are constantly in each other's face. I'm constantly in my husband's face, और हम लोग झगड़े कर रहे होते हैं, फिर वापस वो सब भी हो रहा है. But there are ways to deal with it, right? One last thing before I go give you the chance to speak is कि ये जो term था, मैं I think काफी time से कह रही हूँ, social distancing का term, जो मैंने अपने clients में फिर देखा कि they are taking it as मैं घर में जिसके साथ हूँ उससे भी distance रखूं. अगर आप घर में किसी के साथ हैं, आप उससे distance ना रखें, जरूरी नहीं है, क्योंकि कि they don't have COVID. आपके साथ वो अगर रह रहे हैं आपके तो उनके साथ तो आप डिस्टेंस ना. तो फिजिकल डिस्टेंसिंग का टर्म ज्यादा आई थिंक अप्रोप्रिएट है. जो आप अगर कभी गूगल करें सोशल डिस्टेंसिंग तो आता है इंटरचेंजेबल विद फिजिकल डिस्टेंसिंग. लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग 6 फीट अपार्ट वगैरह जरूर रखें, लेकिन इमोशनली कनेक्ट करें लोगों से, सोशली कनेक्ट करें लोगों से especially via phone calls and video calls these days. Messages do not convey the same emotions that phone calls and video calls and these things. तो सोशल कनेक्टेडनेस आजकल ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे इमोशंस रॉ हैं, सरफेस पर हैं, सब फटके आ जाते हैं, फिर झगड़े भी होते हैं. लेकिन जब आप कनेक्टेड रहेंगे विद पीपल, वेदर योर आंट और अंकल इज अब्रॉड, योर ग्रैंड पेरेंट्स आर लिविंग इन अ डिफरेंट सिटी, कनेक्टेड रहेंगे, आप उसको बेटर हैंडल कर सकेंगे, बिकॉज यू नो योर लव्ड वंस आर आल्सो सेफ. Absolutely, absolutely. So the key point is, number one, acceptance of whatever is happening, because until unless if you are in a state of denial, you won't be able to combat that. Can never. Also at the same time, in fact, it's for the first time that the whole world is actually rowing in the same boat. Sare ke sare. I mean, the underdeveloped countries, or what we can say, the BRIC countries, I think, actually, Sorry, we are in the same storm, but we are not all in the same boat. Because हम लोग privileged हैं, we have access to things. अब वो marginalized communities का सोचें, daily wage workers जिसका हम लोग. Okay. The context over here, because if I see as Pakistan, the developing countries, if you look up to the developed world, I mean, so we are actually rowing in the same boat. कि इसको cure करना किस तरह से है? We are struggling for it. Definitely we still have a privilege. We have a margin of a privilege compared to the other social stratas of the economy. With that same spirit, moving forward to Miss Ayla, because you belong from the health community from Aachen, and you must be aware of किस तरह के situations आपके पास भी काफी ज़्यादा prevalently आती होंगी. Now right now, because what Falak has elucidated, that we need to bring that regularity into this irregularity, what's happening right now, because that is the only way you will be able to combat the stress. कहीं लगा जहाँ पे लोगों को लग रहा है कि वर्क फ्रॉम होम की वजह से वो जिंदगी में ज्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है. हाँ, कहीं ऐसा फीलर है. कुछ को ऐसा लग रहा है कि उनका जो बॉडी क्लॉक है वो थोड़ा डिफरेंट हो गया है. 5 बजे काम खत्म होता था, ये 6 बजे काम करना शुरू हुए हैं. Because that's how the things are working. Number one, how exactly they have to keep this balance, first off. And number two, if they have a lot of leisure time, how to use it when you are inside the home and you have no other option to go outside. All right. So first up, आपने work from home की बात की. So it's really important to kind of have that priority list developed as to how much time I'm supposed to be giving to the work that I have as the organization demands, और जो मेरे working hours है वो किस time तक हैं. So try to kind of prioritize those timings. I mean, अगर आप अब तक काम कर रहे हैं, 2 महीने हो चुके हैं लॉकडाउन को, तो you probably are aware of किस वक्त ज़्यादा काम होता है, किस वक्त काम होता है. I know कि fluctuations होंगी, but try to prioritize that time. कि अगर मेरा ज़्यादातर काम जो है वो 10 बजे से लेकर 6 बजे तक होता है, then try to finish it up at that time, and then try to give yourself a break. And a lot of people are taking a break from work only to take break in Netflix or in phone. There's nothing wrong with that, but then जैसे कि फलक ने budgeting का word use किया, I
द वर्ड डाइट, कि आप किस तरीके से अपनी डाइट में सोशल मीडिया को या किस तरीके से अपनी डाइट में स्क्रीन को ऐड कर सकते हैं. सो यू नो इट्स नॉट, मैं ये नहीं कह रही कि आप ऐड नहीं करें, मैं ये कह रही हूँ कि जस्ट बी पिकी अबाउट व्हाट यू ऐड, व्हाट यू पुट ऑन योर प्लेट, एंड सो दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू मेंटेन दैट बैलेंस. रूटीन इज समथिंग जिससे हमें कंट्रोल आता है. ह्यूमंस वांट कंट्रोल, ह्यूमन नीड सर्टेनिटी. तो उसके लिए मैं यही कहूंगी कि आप थोड़ा स्केड्यूलिंग कर लें. इट शुड बी फ्लेक्सिबल, इट शुडंट बी लाइक अ very fixed rigid schedule, but that's how you're going to find the balance. And then a lot of people are putting food pictures these days. I'm sorry for it's Ramzan, but something people find comfort in. They like baking and they like writing something or journaling, and all those things that we didn't have the chance to do at a particular time, wo ab hum kar sakte hain. So in a limited resources, इंसान को nature ने बहुत flexible, बहुत adaptable बनाया है. So with just a little period of adjustment, we will be able to kind of adjust through our routine. And जैसे फलक ने कहा, self awareness इस पे बहुत ज़्यादा important role play करती है कि मैं शाम को ज़्यादा relax कर पाती हूँ, तो मैं शाम को वो activities कर ली. कुछ चीज़ें मुझे लगता है मैं morning में anxious हूँ, तो जो मुझे अगर deep breathing exercise करनी है, तो मैं morning में उससे start कर लूँ. That is how we're going to find the balance. But रात को 12 बजे तक अगर आप मेल्स चेक कर रहे हैं बिकॉज आपको बस आदत हो रही है करने की, तो दैट इज समथिंग दैट यू नीड, दैट इज डिस्करेज्ड. टाइमिंग ऑफ द वर्क शुड बी एज सच कि आप उसी के टाइम कंप्लीट करें. बट सम पीपल हैव क्लाइंट्स एंड स्टफ लाइक दैट जिनको थोड़ा सा लेट नाइट भी काम करना होगा. बट देन गिव योरसेल्फ द चांस एंड कम्युनिकेट योर नीड्स टू योर एम्प्लॉयर्स आल्सो. जब बर्न आउट हो रहे हैं तो colleague who's sharing the same routine or same work nature as you will obviously help in that scenario. Hello? Yeah, we can hear you. We can hear you. There was a little bit distortion of the internet probably because definitely सभी लोग घर के अंदर ही हैं, तो वो bandwidth के ऊपर कोई ना कोई impact जरूर आ रहा होगा. And it's happening everywhere. Yeah. So yeah, because there's one amazing insight what you have given in your brief, that's of self-awareness, because the more you are aware about yourself, then definitely you will be able to do the right thing. And another thing, that you need to be very much picky about the kind of diet you are having, not only about the food, but also about the media, about the screen diet that you are consuming, because definitely what you consume consumes you. ये एक बड़ी पुरानी कहावत है. Yeah, आप जो what you consume consumes you. वो अब चाहे वो whatever it is, if it's a music, if it's the kind of people we are meeting with. There is another popular phrase of Mr. Jim Rohn that your personality is actually an average of 5 people with whom you interact the most. So अभी मैं सोच रहा था, because right now I am in a lockdown. So the person with whom I'm meeting the most, that's myself. So maybe this is the state is my raw state, this is the state is my real state. So moving towards Mr. Mavish Rafiq, because you're a NLP expert, and so my first of the very simple question. अच्छा, ये question जो है वो किसी audience की तरफ से आया था, because पहले तो ये है कि NLP की अभी इतनी ज़्यादा हमारे माशरे में आगाही है नहीं. आहिस्ता आहिस्ता लोग समझ रहे हैं कि ये चीज़ है क्या. पहली बात. दूसरा ये है कि जब सेल्फ अवेयरनेस की बात करी जाती है कि अपने आप को जानने का जो तरीका होता है, so how exactly NLP can help you in that particular part, in such kind of circumstances? I'm audible? Yeah, you're audible. Yeah. जो आपने पूछा कि NLP, how NLP can help us, कि हम अपने आप को कैसे जान सकें, तो I would like to add कि अगर आपको अपने आप को जानना है, as I am a clinical psychologist as well, hypnotherapist and NLP practitioner, मैं खुद अगर अपनी बात करूं तो मैं ज़्यादा साइकोलॉजी पे बेस करती हूँ. वजह ये है कि साइकोलॉजी आपको डीप डाउन जो आपकी रूट कॉजेज होती हैं उनके ऊपर फंक्शन करती है, उनके ऊपर काम करती है कि डीप डाउन आपके क्या फियर्स हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप अपनी लेटर ऑन जिंदगी में डेली रूटीन में फेस कर रहे हो. अब जहाँ तक NLP की बात है, NLP आपको जो है ओवरऑल जिसको कहते हैं आप सरफेस से आपको ज़रूर कहते हैं हेल्प आउट करती है कि जो सरफेस पे आपको मसला आ रहा हो. फॉर एग्जांपल एक बहुत छोटी सी मिसाल है कि जैसे अगर कोई एक पौधा है, उसके अगर जड़ों में मसला है
तो आप उसकी जड़ों को हील करोगे। लेकिन साइकोलॉजी इज जस्ट लाइक दैट कि वो आपकी डीप डाउन रूट कॉजेस की तरफ जाती है। एनएलपी इज लाइक कि आप उसके सरफेस पे, यानी अगर कोई पौधा है उसके ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसकी मिट्टी को साफ करोगे। तो एनएलपी इज लाइक दिस, ठीक है। अब अगर एनएलपी की ही टेक्निक देखनी है तो एनएलपी बेसिकली 5 सेंसेस पे बेस करती है। वन इज ऑडिटरी, विजुअल, कैनेस्थेटिक और गस्टेटरी एंड ऑल्फैक्टरी, जो कि हमारी 5 सेंसेस है, दैट इज देखना, सुनना, महसूस करना, सूंघना और टेस्ट यानी जायका। अब ये है कि हम किस तरह से अपनी आपको जान सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो कि हमें क्या चीज ज्यादा बॉदर कर रही है। इज दैट द न्यूज, कि आपको ये चीज बॉदर कर रही है सुनने में। नाउ वी हैव टू लिसन फर्स्ट कि हमारे लिए वो वर्ड्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि मुझे न्यूज सुन के घबराहट हो रही है, तो इट फोकस ऑन द वर्ड्स आ रहे हैं सुनना, इट मीन्स मुझे सुनने से ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। बट इफ आई से कि फलां शख्स मेरे पास से गुजर गया और मुझे महसूस होने लगा कि जैसे मुझे कोई चीज टच कर रही हो या मुझे वायरस लग जाए, देन इट मीन्स मेरी जो कैनेस्थेटिक यानी जो टच की मोडालिटी, कैनेस्थेटिक राइट, वो जो है मेरी मोडालिटी वो इस वक्त ज्यादा एक्टिव हुई है। मेरी आवाज आ रही है? There was a little bit robotic in the middle. Yeah, but now it's all clear. Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। I'm so sorry, internet issue might be okay। तो बेसिकली मैं आपको ये बताई थी कि अगर कैनेस्थेटिक प्रॉब्लम आ रही है, कैनेस्थेटिक वर्ड्स मैं यूज कर रही हूँ, वर्ड से ही हमारे मोडालिटी जाहिर हो रही होती है कि हमें कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ मैंने फलां शख्स को देखा, वो इस तरह से उसको बीमारी लगी हुई थी और मुझे देख के कुछ हो रहा, तो इट मीन्स मेरी विजुअल ज्यादा है। तो अगर आप अपनी प्रॉब्लम को जान गए हो कि आपको ज्यादा कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, हमें सिर्फ अपने आप पे ध्यान देने की जरूरत है। व्हाट वी नीड फुल ऑब्जर्वेशन अपने ऊपर। हम अनफॉर्चुनेटली हम दूसरों को ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने आप को ऑब्जर्व करने की जरूरत है, अपने खुद को देखने की ज्यादा जरूरत है, खुद को समझने की ज्यादा जरूरत है। एंड आई थिंक जो आजकल हम लोगों को लॉकडाउन की वजह से घर में टाइम मिल रहा है, आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू नो योरसेल्फ। अपने आप पे ध्यान दिया जाए, अपने आप को जाना जाए। तो हमें अपने वर्ड्स जो हम डेली यूज कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में बहनें हैं, भाई हैं, आप उनके साथ जो आपकी डेली कन्वर्सेशन हो रही होती है उसको बाद में सोचें कि आपने क्या बोला, कैसे बोला, किस सेंस में बोला। आपको पता चल जाएगा कि आपकी मोडालिटी क्या है और जिस मोडालिटी में आपका ज्यादा फियर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी फन की बात कर रहे हैं तो वो हम कैनेस्थेटिक में कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई फियर की बात कर रहे हैं तो वो ऑडिटरी में कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि वहां आपको मसला आ रहा है। देन आपको उसी तरह की चीजों को कट डाउन कर लेना बेहतर होगा। फॉर एग्जाम्पल न्यूज सुनना, अगर न्यूज सुनने से आपको प्रॉब्लम आ रहा है, फियर हो रहा है ज्यादा, या आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है डेली फंक्शनिंग कोविड-19 की वजह से, तो आप न्यूज को कट डाउन करो। आप उसको रिप्लेस कर सकते हो म्यूजिक से। यू कैन रिप्लेस, और आजकल जैसे रमजान है, यू कैन रिप्लेस दैट विद तलावत और नात। इस तरह की चीजों से उसको रिप्लेस किया जा सकता है। अदर देन दैट अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कैनेस्थेटिक मोड पे, मोडालिटी पे, देन आप वजू रह सकते हो। आप क्योंकि कोविड-19 में भी यही कहा जा रहा है कि आप साफ सुथरे रहें, हाथ धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, तो आप बावजू रहो। एक इससे भी आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि यू आर क्लीन, तो अब आपको कोई जर्म आपके पास नहीं आएगा। इन द सेम वे एनएलपी में आप इन मोडालिटीज के ऊपर अगर काम करो तो आप अपने आप को जान सकते हो। यू कैन गेट अवेयरनेस ऑफ योर ओन सेल्फ। देन एक एबीसी स्ट्रेटेजी होती है। ABC is A for awareness, B is for balance and C is for control। जहां आपको अवेयरनेस आ गई कि आपको फलां चीज से मसला आ रहा है या फलां चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है या आपकी डेली फंक्शनिंग में इम्पेयरमेंट आ रही है, आपको जब वो पता चल गया, अवेयरनेस आ गया, आप उसी चीज को बैलेंस करो। दैट इज ABC, B फॉर बैलेंस। आप उस चीज को बैलेंस करो। जब आप उसको बैलेंस करने में कामयाब हो जाओ, देन यू कैन टेक कंट्रोल। जब वो कंट्रोल आ जाएगा तो जो आपकी इम्पेयरमेंट डेली फंक्शनिंग में आ रही है या जो भी आपका प्रॉब्लम आ रहा है डेली लाइफ में,
वो खुद ही सॉल्व हो जाएगा। जो शुरू में इस सेशन के बात हुई कि वी नीड टू हैव कंट्रोल, तो हमें वहीं से कंट्रोल मिल जाएगा, तो वो काफी हद तक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगी अगर हमें थोड़ा सा भी कंट्रोल हमारे ही मामलात में मिल जाए। Okay, thank you, Mavish. That was wonderful on actually highlighting what are the inputs, sources, and the modalities that can actually we need to be aware of to cure ourselves. Okay, so we have two of the panelists. They have actually raised hand and they want to have some input on this. So, Mr. Yasser and Ms. Falak. Yeah, Mr. Yasser, you wanted to add something? So, please do so. अभी जो महविश ने बात की ना, मैं I just want to thank her कि NLP और साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस के हवाले से जो उन्होंने डिफरेंशिएट किया, दैट इज वेरी एक्सक्यूज मी क्रिटिकल। हमें किस अपने मसले से निपटने के लिए कौन सी हिकमत अमली अपनानी है, उनका आपस में ताल्लुक बहुत गहरा है। जिस तरह मेडिकल साइंसेस का सब्जेक्ट मैटर जो है वो फिजियोलॉजी है, बिल्कुल इसी तरह साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो कॉन्शियसनेस है। और जब हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो वी हैव टू गो अ लिटिल डीपर इनटू द क्राफ्ट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस एंड डिफरेंट लेयर्स ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। यहाँ सेल्फ अवेयरनेस की बात हुई, सेल्फ अवेयरनेस के साथ साथ कंट्रोल की बात हुई। मैं सिर्फ रिकैप कर दूं कि कंट्रोल से ज्यादा बेहतर इस्तेलाह जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो शायद रेगुलेशन की है। हमें खुद को रेगुलेट करना है, और रेगुलेट करने के लिए भी ऑफ कोर्स वी हैव टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टू अस। मैंने जैसे अपने पहले ओपनिंग रिमार्क में कहा था कि हमारी जो सेंसरी परसेप्शंस हैं वो डिटरमिन करती हैं हमारे साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज को। तो बुनियादी तौर पर हमारी सेंसरी परसेप्शन को रेगुलेट करने के लिए जो रूटीन, नई रूटीन, न्यू नॉर्मल के साथ खुद को अडेप्ट करने की बात हो रही है वो हमारे सेंसरी एक्सपोजर की हो रही है। अभी हमारे तमाम पैनलिस्ट ने बड़े पर्टिनेंट पॉइंट्स किए। एक दो चीजें जो थोड़ी सी मुझे लगा कि मैकेनिकल हो रही हैं, उनको मैं जरा नॉन मैकेनिकल और सिंप्लीफाई करना चाहूंगा कि आपके रूटीन का, आपके वक्त का, तवानाई का, एनर्जी का और तवज्जो का, अटेंशन का एक बड़ा हिस्सा ग्राउंडिंग रिलेटेड आपकी एंगेजमेंट्स पे होना चाहिए। यू हैव टू स्टे कनेक्टेड विद नेचर। हमारे बहुत से काम ऐसे थे हुसैन, जो आप भी जितने हमारे पैनलिस्ट और दोस्त सुन रहे हैं, जो जिंदगी की गुनागुन मसरूफियात में होने के बावजूद हम करना चाह रहे होते थे। हमारी कुछ किताबें थी जो अभी हमने पढ़नी थी, हमने कुछ दोस्तों से अपने कनेक्शन इस्टेब्लिश करने थे जो हमारे बिजनेस फ्रेंड्स नहीं थे, हमारे कुछ लॉस्ट कनेक्शंस हैं जिनसे हमने अपने रिलेशनशिप रिवाइव करने थे। हमने अपने घर के कुछ स्टोर रूम की, कमरों की रीअरेंजमेंट करनी थी, सफाई करनी थी, डीक्लटरिंग करनी थी। बहुत से काम थे जो बैक बर्नर पे थे। दैट इज द टाइम टू कनेक्ट विद देम एंड टू गेट योर sensory perceptors exposed to new things, more refreshing things. Explore something which is residing within you, around you, in the orbit of your safe haven. So that is how you will be able to come up with that part of not only self-awareness, rather self-regulation, which is critically important in these times of physical distancing and self-isolation. Thank you so much. I think in a nutshell, it has been beautifully elucidated, and your insight, Mr. Yasser, acted as a cherry on the top for the better understanding. Ms. Falak, yeah, you wanted to have something on the table? Yeah, am I audible? Okay. Just to add to what Mr. Yasser just said, yes, we need to connect with some of the factors that you just named, but एक चीज जो मैंने सुनी भी है, पढ़ी भी है, is that a lot of people are saying, you know, like I just completed a new article, or I just finished my PhD, or I just cleaned out my basement या my attic या जहाँ मेरा store room है, and some people are questioning कि हमसे ये नहीं हो पा रहा है. I cannot be as productive as people are posting on Twitter and Facebook, and unfortunately बहुत posting हो रही है because social media suddenly boom पर है. तो you know, एक चीज जो again accept कर लेनी चाहिए कि all the time we all will not be productive. If at a time you're feeling कि आज मुझसे काम नहीं हो रहा या मुझसे ये decluttering नहीं हो रही, it's okay. It's okay to take a step back. It's okay to give yourself some me time.
you know, आपको चाय अच्छी लगती है, आप या आपको, like he said, grounding is very important, connecting with nature. आपने कहा हम बाहर नहीं जा सकते, आप अपने गार्डन में अगर आपके पास है, आप वहाँ डेफिनेटली जाएं. मेरे पास गार्डन है, मुझे अनफॉर्चुनेटली मैं ये बार बार कहती हूँ कि मुझे कीड़े मकोड़े अच्छे नहीं लगते, मैं अपने टेरेस से गार्डन में जाऊँ. I take my cup of tea to the terrace, but I love the greenery there. So you know, that's what I do. I found my way that helps me calm myself, that helps me connect with, that helps me get grounded, but also that gives me some time for myself, because that's also very important. And जो एक बात मैंने hand raise उस वक्त की थी when Ayla was speaking, was because since you're at AKU, I just wanted some insight myself, because I do have people talking about you know, frontline workers and nurses and doctors. Have you had any connection with them? What have you heard that probably maybe should have been Hussain's job later on? Shayad ye question aata bhi, but I think very curiosity took a toll on me, and I just wanted to ask you about frontline workers. Okay. Mental health. So, all right. So, Falak, thank you for your question, and you can. I would after the session, I can also speak to you about it. You can get my contact from the team, and I'd be personally answering that question for you. मुझे भी एक बात ऐड करनी थी, वो ये है कि जब अभी मिस महविश ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है about the awareness part, the balance, and the regulation part. And if I connect with the question you asked, work from home का, तो कभी कभार तो हमें बैलेंस और कंट्रोल रूटीन से मिल जाता है, और कभी कभार you know, you can become spontaneous at the same moment. And one thing I wanted to add was that आप सुबह उठें, you have a routine, dress up, like I know हर दिन नहीं आप कर सकते, but that routine, just dress up like you go for work, आप अपना टेबल वहाँ पे arrange करें, just you know, try to lift that routine. So you know, even today after a long while I did dress up and I felt great. And so what you can do is कुछ चीजें तो आप routine से manage कर लेते हैं, right? And कुछ चीजें आपने कर लीजिए, मुझे ये चीज करनी है, and then for a few hours give yourself that leverage to kind अपने mind, अब हमने consciousness की बात की, इसी तरीके से हमारा subconscious unconscious mind होता है, आप उसको उसके ऊपर rely करें. सोचने का अमल बहुत मुश्किल होता है, हर चीज माइक्रो मैनेज नहीं करनी, इसमें कहीं कंट्रोल रखें और कहीं पे अपने आप को स्पॉन्टेनियस भी होने देंगे. दिल चाह रहा है कुछ करने का, कुछ सुनने का, कुछ देखने का, तो आप उन मोडालिटीज को भी यूज कर सकते हैं. समथिंग दैट आई वांटेड टू से. All right, brilliant. I think it's gonna we will going to have around few more minutes in our hand, almost 10 more minutes. So हम लोगों ने personal capacity के ऊपर तो सबने गुफ्तगू करी, और I think it's been a brilliant, very insightful. I have actually jotted down the meeting minutes as well, because that will actually going to help me to ponder over अफ्तार के बाद कि भाई आज जो गुफ्तगू है उसका खुलासा क्या है, और अगर खुलासा जो है वो अगर हमारे अमल में नहीं आ रहा है तो फिर तो गुफ्तगू ही है, ठीक है. तो जब तक अमल में नहीं आ रहा तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है. So I have actually jotted down all the points for my own development. So thank you so much all four of you. मेरा आखिरी जो सवाल है वो आप चारों से ही होगा. I'll start with Mr. Yasir, Mavish, Ayla, and then closing with Falak, and then I will be opening the house if किसी को सवाल करना so they can actually chip in too. If you actually go through the LinkedIn, Twitter, the whole social media in fact right now, तो एक सोशल मीडिया का अपना पेंडेमिक चल रहा है. जो दुनिया में हो रहा है वो तो हो रहा है, वहां एक अपना एक वबा चल रही है जो डेली हर घंटे के बाद ट्रेंडिंग की सूरत में आपको कोई ना कोई नई शक्ल दे रही होती है. Now I was actually going through, because there is a lot of issues in regarding the layoffs, regarding the job motivation, regarding the engagement, and I'm not going to name the name any organization over here, लेकिन किस तरह से forced resignations किए गए हैं. In fact, I was just going through the Virgin Atlantic, Richard Branson की जो कंपनी है, तो पहली बार हुआ है हिस्ट्री के अंदर कुछ नाम तो 300-350 पायलट्स को ले ऑफ किया गया है. किसी को बोला गया है कि आप नॉन पेड अभी सबैटिकल्स के ऊपर अभी आप हमारे साथ काम करें. So keeping all these things in consideration, definitely the work is actually the growth engine of your life, is creating a fear rather than a motivation for you in such kind of circumstances. Mr. Yasir, what initiatives an organization should do to actually concern about के hey कोई बात नहीं, situation खराब है, but we are there for you, and what exactly the initiatives you would like to suggest to the corporate sector exclusively in this particular situation? अच्छा, एक जिसे कहते हैं टर्म यूज होती है टाइम टू क्रैश कॉर्पोरेट सेक्टर में, बड़ी कंपनीज के अंदर. अगेन
फ्रॉइड ने एक प्रिंसिपल, 2 प्रिंसिपल्स दिए थे, एक रियलिटी प्रिंसिपल था, एक प्लेजर प्रिंसिपल था। अब कॉर्पोरेट सेक्टर को मैं किसी प्लेजर प्रिंसिपल बेस्ड राय या मशवरा तो नहीं दे सकता। देखिए, जब हम बिजनेसेस की बात करते हैं, बिजनेस बाय डेफिनेशन इज टू अर्न प्रॉफिट। You make more money, it is one way to make profit. You save more, it is another way to make profit. अब ये एक रियलिटी का वो बेटर पार्ट है जो मैंने, मेरा पहला पॉइंट मेरा ख्याल है सारी गुफ्तगू बार बार उसी के घूमेगी, दैट इज रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस। हमारी जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसका जो फाइनेंशियल मसल है वो कितना वो इनेबल करता है कि अफोर्ड कर सके कि अपने नॉन प्रोडक्टिव फेज के अंदर वो अपनी वर्क फोर्स को एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कायम रखे या उनकी एम्प्लॉयमेंट इंटैक्ट रखे। ये कॉर्पोरेट कॉन्शियसनेस या कॉर्पोरेट सिटीजनरी या सिटीजनशिप का से बढ़कर एक मॉरल कंपस जो है या एक एथिकल जिसे कहिए एक स्टैंडर्ड या एथिकल डायलेमा है, मैं इसको करूंगा, जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर इस वक्त फेस कर रहा होगा। Knowing corporate sector, being part of being there in their boardrooms, I do believe that there are humans who are managing corporate sector and they do feel that feel of laying off people, but it is there when it becomes inevitable, right? So I would request corporate sector that certain strategies, for instance, if it is instead of laying people off, अगर वो टाइम टू क्रैश जो है टीटीसी जो है वो उनका 3 महीने का है तो उसको 6 महीने पर ले जाने के लिए पूरे महीने की तनख्वाह देने की बजाय अगर आप 60% या 50% या 70% सैलरी पे करते हुए एक बंदे को 2 महीने के लिए रखें, बजाय कि आज आप उसको सेवरेंस पैकेज दें और उसको ले ऑफ कर दें। These kind of strategies can be adopted by the corporate sector. I will be very blunt to say कि इस स्टेज पर सुहेल जिंदानी, कैसर अब्बास, यासिर आफाक या इन लोगों की ट्रेनिंग से आप कहें कि जी कोई मोटिवेशन क्रिएट हो जाए, नो, इट wouldn't be very pertinent to say that at this time you will go for some cosmetic interventions to manage the fears which people are feeling. So we have to be very practically oriented, following the reality principles. Thank you, Mr. Rafaq. Moving to Ms. Falak, would you like to shed some light on the similar question? What solution, what suggestion you can actually give to the sector, the employee sector, in fact, that is actually running the whole economy, that how exactly they can sustain the motivation during such kind of a distancing and the pandemic situation? You're asking if how employees themselves can sustain their motivation. How organization? How the organization. Okay, मैं एक चीज जरूर कहूँगी. You know, unfortunately, a lot of our organizations and a lot of world over organizations, the concept that I am the manager, you know, an authoritarian concept is also there. वैसे भी थोड़ी lacking होती है. Leadership qualities are something very different. Leadership qualities talk about things like, you know, accept that this is, like he said, acceptance har jagah hi aayega, but accept that this is the true reality these days. I should not lie. I should not paint a fake picture for my employees. We accept कि आपका motivation भी कम होगा कभी. We also accept कि आपकी फैमिली में अगर God forbid किसी को कोई पॉजिटिव हुआ, कोविड पॉजिटिव, तो उसके अलग मसले आएंगे. So you know, you have to actually, the idea is that okay, first step is कि आप अपने employees से connect करें. I think that is where you be a leader rather than the manager or the owner, या ये कि भाई मेरा profit नहीं हो रहा तो मैं आपको lay off कर रहा हूँ or everything. I mean, lay off I guess is a last resort, as I think we just understood कि they are human at a level. But एक चीज है कि आप काम से ऊपर भी फिर देखें. थोड़ा सा जब हम leadership की बात करते हैं तो it's not always कि आप एक meeting कर रहे हैं just because you know you have an agenda planned कि मुझे आज अपने employees से पूछना है कि कितने sanitizers बने और कैसे हम इसकी marketing करेंगे, etc etc whatever, right?
If you have a Zoom meeting, start with pleasantries, start with a sense of motivation, connect with your employees. Okay, how, oh, let's share something today before we move on to work, or have a separate, you know, recently I heard, I think एक कोई educational institute है, IBA, IOBM, Zabist, one of those, because मैं कराची की ज़्यादा ना, I forget which one, but they're having these online Zoom meetings with their alumni as well. So teachers plus alumni. Yeah. Right? Now teachers are IOBM getting, started that. Yeah. okay, IOBM, thank you. But teachers जहाँ involve हो रही है वहाँ उनको sense of motivation आ रहा है फिर, right? क्योंकि learning में मैंने इन लोगों के इसके ऊपर ये impact किया है कि अब ये बाहर जाके ये successful है या ये हो रहा है इनके साथ या whatever. Connecting with people you've taught with 5 years before, 10 years before is a whole different feeling. Right? And you look at their successes and you feel happy. Okay, maybe some understand. So that motivated them to a certain extent. Right? I'm not saying but e-learning पे उनका फिर motivation आया कि चलो I can work better. I can not work better, but maybe I can bring about this strategy जो पहले मैं classroom में use करती थी to talk to people. Now I can do it this way on a Zoom class. Right? So just ways of bringing about new innovative strategies, maybe to motivate your employees. Use your leadership qualities, connect with them, accept that they're also humans, and let them see your human side as well. Definitely. You know, you also say that you're also worried, you are also going through the same thing, and you are there for them and they're there for you. Try to build a community at the moment rather than just being, you know, like I said, Setia organization manager. Unfortunately hota tha hai. Exactly. Not fighting against each other, but collectively towards the problem with an intent to cure it. Exactly. एक point है कि we can get through this as a community with a sense of we rather than me. जहाँ आप अपना सोचने लगेंगे, वहाँ आपके लिए खुद आपको mental issues definitely आएंगे, but आप खुद बहुत alienate कर लेंगे अपने आप को. Absolutely. So a sense of we is very important even in organizations these days. So thank you, Falak. That was amazing nugget, encapsulating whatever, encapsulating in fact the whole spirit of taking this whole thing forward. Miss Ayla, अच्छा मेरा आपसे सवाल, because I was actually going through your profile and whatever the preambles what you have given so far, ये बड़ा important है और इसमें बड़ा एक concrete आपसे ना practical तजवीज़ है, recommendation है कि अगर आप social media खासतौर पे Instagram, ठीक है, या Twitter, तो एक तरफ लगता है कि कब्रिस्तान खुला हुआ है, ठीक है, और दूसरी तरफ लगता है कि इससे अच्छी आइडियल जिंदगी किसी की हो ही नहीं सकती. हम जैसे लोग दोनों से परेशान हैं. ठीक है, यहाँ से भी और यहाँ से भी. How exactly? Because we have exactly, because now this is the closest. This is more of like this is so close to a jugular vein. शहर की तरह बिल्कुल हमारे फोन हमारे पास है. After every moment we are going just checking out कि Snapchat पे क्या हो रहा है, दुनिया के अंदर क्या हो रहा है. So in this particular time where your biggest support and partner is your own existence and your digital platforms, how exactly do you have to discipline yourself in using social media for the consumption point of view? Alright, so हमने बात की, आपने मुझे दो एक्सट्रीम्स के बारे में बात बताई है कि कुछ लोग तो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको उनके कॉन्वर्जेशन से लग रहा है कि it's the end of the world, it's the apocalypse. और आप जब दूसरे एंड पर देखते हैं तो आपको डिनाइल में भी लोग नजर आएंगे कि भाई कुछ भी नहीं है, ये तो इस लैब में क्रिएट हुआ था, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये पैसे जमा कर रहे हैं, XYZ. So we have these two extremes, and the जिनको एंजाइटी बिल्कुल भी नहीं है वो डिनाइल में नेसेसरी प्रिकॉशंस भी नहीं ले रहे, उनको नेसेसरी प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है. जो थोड़े से एक्सट्रीम पे एंजाइटी पे ऑपरेट करें, they need to limit their exposure to social media and understanding that आपको informed रहना है, आपको about it is आपके पास recommendation है CDC की, on those credible sources जिनको anxiety, और जो बीच में जहाँ पे आपको लगता है कि बैलेंस ऑफ दोनों के बीच में आपने बैलेंस क्रिएट करना है. अगर आप
दोनों एक्सट्रीम्स पे अपने आप को कहीं पे तो देन टेक द नेसेसरी प्रिकॉशंस। अगर एंजाइटी हो रही है तो इस तरीके से मैनेज करें, और नहीं हो रही है तो फिर अगर एंजाइटी हो ही नहीं रही तो आपको प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। एंड एट द सेम टाइम एक्सेप्टेंस, जिसकी हम शुरू से बात कर रहे थे, अब जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं, वो जिनको बाहर जाने का शौक है, उनको भी यही रहना है। जो इंट्रोवर्ट्स हैं वो बहुत कंफर्टेबल इन देयर स्किन है, but then that's how we respond. That is the name of individual differences. And again, reinforcing the point that balance and self awareness is primary, is key at the moment. If you give me a few minutes, and I don't mean to take a lot of minutes, but recommend जरूर करूंगी। लीडरशिप की फलक ने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जिस एम्प्लॉइज को आप सही से कम्युनिकेट करेंगे, उनको शेल्टर करेंगे, उनकी एंजाइटीज को डील करेंगे, यही स्किल सेट जो सालों साल आपके साथ बना है, और यही स्किल सेट डिटरमिन करेगा कि आने वाले 2 साल में कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को कौन लोग सपोर्ट करने वाले हैं। तो जहाँ पे अगर आप अच्छी लीडरशिप का मुजाहिरा करेंगे तो आपके पास यू विल हैव अ बिगर लॉन्गर टर्म सिस्टम ऑफ वेरी लॉयल, ऑफ वेरी सिंसियर एम्प्लॉइज, जो कि आउट ऑफ द वे जाके भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट्स के लिए काम करते हैं। And again, remembering that बुरे वक्त जो है वेव्स की तरह आते हैं, वो ऊपर जाएगी वेव और वेव ने नीचे आना है, वो कभी भी ऊपर नहीं रहेगी। So understanding that austerity is really important from people's point of view, and just remembering that resilience, इंसान बहुत resilient है, better days are going to be there, we will be on the mend soon. I think ये सारी कुछ realizations हैं जो organizational level पे भी इंसान देख सकता है और जो individual level पे भी हम practice कर सकते हैं। आपकी बात को अगर मैं इनकैप्सुलेट करूं किसी एक कोटेशन में तो मुझे बड़ी पसंद आई थी। आई थिंक आई हैव हर्ड दिस इन एनी मूवी, या मैंने किसी किताब में पढ़ा था, दैट एवरी स्टॉर्म विल रन्स आउट ऑफ रेन eventually. Absolutely. And अगर मैं एक और quotation, sorry दोबारा कहूँ तो, favorite मेरी Harry Potter is my favorite movie and favorite series. So उसके अंदर एक quotation है, happiness can be found in the darkest of times, but only if you remember to turn the light on. अगर आप अंधेरे में happiness को तलाश करते रहेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। Just like चाबी को अगर आप अंधेरे में तलाश करेंगे तो आपको चाबी नहीं मिलेगी, कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। यू हैव टू टर्न द लाइट ऑन, you have to see you have to go into that place to see happiness, and I guess we will be on the mend soon. हमने हमारी हिस्ट्री में बहुत सारे पैंडेमिक्स, बहुत सारी वॉर्स जो है वो बर्दाश्त की हैं, और अब जो हमारा अवेयरनेस है, टेक्नोलॉजी है, वी आर एट अ बेटर पोजीशन। कभी भी वैक्सीनेशन इतनी जल्दी तैयार नहीं हुई जितनी इसकी हो जाने की चांसेस हैं। तो अगेन, पहले जिस तरह हमारी ह्यूमन रेस ने सर्वाइव कर लिया, इट इज इन आवर इंस्टिंक्ट्स, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर एवोल्यूशन दैट वी विल कम आउट ऑफ इट। सो रिमेंबरिंग दैट इज रियली important. Hopefully, promisingly, hopefully. So I am moving towards Ms. Mavish for your last 2 cents, because there is a lot that we want to do. There are a lot of people you must have met from in your course of life कि हम ये काम करना चाहते हैं, हम किताब पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ नहीं पाते, हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं, कर नहीं पाते. What exactly will going to be your solution to break free that element into yourself, and so that you can ignite that will to go and just do it? Okay, सबसे पहले तो जैसे आइला ने कहा, मैं उसको सेकंड करना चाहूंगी कि जो उन्होंने क्या कहते हैं अपने ये एम्प्लॉयज के बारे में कहा, इसमें मैं एड इन पहले करना चाहूंगी कि एवरी एम्प्लॉय इज एन एसेट। तो जो भी आप कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके वो सिर्फ नाम से तो नहीं बनती ना, वो उनको उनके एम्प्लॉयज ही बनाते हैं। तो अगर वो अपने एसेट्स जो कि उनके एम्प्लॉयज हैं उनका अभी ख्याल रखेंगे तो यही एसेट्स उनके आगे काम आएंगे। तो आई वुड एग्री विद आयला। फर्दर जो आपने सवाल किया, एक चीज है कि सबसे पहले तो हम किताब पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले ये पूछने की जरूरत है वाकई पढ़ना चाहते हैं या ये कहीं से प्रेशर आ रहा है। सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है व्हाट एग्जैक्टली यू नीड। डू यू रियली नीड टू रीड दैट बुक? You really need to do that exercise? मोटिवेशन कहाँ है उसकी? अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज करना चाहते हो क्योंकि बाकी लोग भी करते हैं, या सिर्फ एक किताब में पढ़ लिया था कि एक्सरसाइज करने से इंसान तंदुरुस्त रहता है, तो that is not enough. अगर आप बुक सिर्फ इसलिए पढ़ना चाहते हो कि कोई काम नहीं है तो बुक पढ़ लेते हैं, या हमें क्या कहते हैं अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना है तो उसके लिए, तो क्या आर यू रियली इंटरेस्टेड इन दैट रिसर्च प्रपोजल? क्या आप वाकई उसमें इंटरेस्ट लेते हो? आप ज्यादा ध्यान, जहां आपका इंटरेस्ट होता है वहां आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपका इंटरेस्ट है बुक पढ़ने में, अगर आपका इंटरेस्ट है एक्सरसाइज में, देन यू डोंट नीड टू हैव अ मोटिवेशनल
कर या आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आप खुद ही, अगर आपका इंटरेस्ट होगा आप खुद ही उस तरफ जाओगे। लेकिन अगर ये सुनी सुनाई बातें हैं कि मुझे बुक पढ़नी है और मैं पढ़ नहीं पा रहा, या मुझे एक्सरसाइज करनी है मैं कर नहीं पा रहा, देन फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस कि आप अगर नहीं कर पा रहे तो उस दौरान आप क्या काम है जो कर रहे हो, जो कर रहे हो वही फिर आपका बेसिक इंटरेस्ट है, वही आपका मेन इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बुक पढ़ने का है, अगर बुक पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बट इन दैट टाइम जो अगर आप उसके अंदर अपनी कोई अदर एक्टिविटी, म्यूजिक या टीवी या कोई और गेम्स के ऊपर हो, तो इट मीन्स दैट इज योर बेसिक इंटरेस्ट। तो व्हाट आई रियली रिकमेंड कि पहले आप अपना शौक पूरा कर लीजिए, फिर जब आपका टाइम बच जाए तब आप अपना जो बाकी का काम है, जैसे कि बुक पढ़ना जो कि आपके माइंड में सेकेंडरी है, फिर आप उसकी तरफ आइए। जब आपका शौक पूरा हो जाएगा गेम का, म्यूजिक का, या जो भी आपका जो आपका प्राइमरी गोल है, फिर आप सेकेंडरी की तरफ भी आएंगे। हमेशा पहले प्राइमरी चीज को पूरा किया जाता है, देन नेक्स्ट इज टू फोकस ऑन द सेकेंडरी। Ayla, you have a point. I can see that you have raised your hand. Yeah. Yes. जी, मुझे महविश की बात में ऐड क्या काम क्यों करना चाह रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम डिसिप्लिन का ये पार्ट होता है कि आपने अपने जिंदगी में वो चीजें भी ऐड करनी है विच द एक्सपर्ट्स आर टेलिंग यू टू ऐड ऑल्सो इन अ वे कि अगर मुझे नहीं पता है कि मुझे क्यों फिजिकल एक्टिविटी करने की जरूरत है, तो मे बी आई नीड टू जस्ट लुक इट अप अ लिटिल बिट और हैव दैट कॉग्निटिव प्रोसेस। इट डज रिलीज endorphins, it does release those happy hormones. तो अगर कोई डिसिप्लिन अगर मैं अपनी जिंदगी को करना चाह रही हूँ, मैं कोई ऐसी हेल्दी एक्टिविटी जो कि रेकमेंडेड है, उसके लिए जरूरी है कि आप रेलेवेंस उसकी रखें कि ठीक है ये रिसर्च सजेस्ट करती है, थोड़ा सर्च भी करें, एंड देन मेरे लिए क्यों रेलेवेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर मी, how is it in alignment with my values is going to determine if you're going to do the behavior or not. So Makes sense. Makes a lot of sense. So if I encapsulate and in a nutshell about whatever the discussions we have had so far, it's been an amazing discussion. I wish it was all done in person like we have done it in the previous conference. But yeah, leveraging whatever with the resources and the tools we have right now, and it's been an amazing discussion so far. So starting out with first off, कि जैसे भी हालात हैं, जो भी दुश्वारियां हैं, जितनी भी दिक्कतें हैं, जितनी भी खुशादा जिंदगी है, जितनी भी खसीस किस्म की सूरत हाल से गुजर रहे हैं, पहली बात तो ये उसे अपना लीजिए, हजम कर लीजिए, तो ये एक्सेप्ट इट, बिकॉज देयर इज नो unless if you will stay in a state of denial, that denial will going to eat you in the long run. And accept first off. Second of all, work on the principle what I think Mavish has elucidated, ABC, awareness, balance and control. And at the same time, you need to be very much aware of how you have to regulate your sensory perceptions to have a better command and control on your own development. And then you have the declutter the thoughts, the declutter the things that you have around, because unless if you're not going to clean it, the solidity will going to have an impact on you, and it will eventually going to penetrate you in your life, in your mind, so gradually. Another point is be grounded. Whatever you have attempted to do so, whatever you are looking forward to do so. So be very certain, be very definite, and be grounded in your stance as well. And yes, closing up with what Mavish has stated, that if you really need to have a motivation to do something, you need to develop and cultivate an interest for that first. Because once the interest is that, the motivation will eventually going to be the prerequisite of that. So all the four participants, all four the panelists we have had, so Ms. Palak, Mr. Yasser, Ms. Ayla, Ms. Navish, thank you so much. If you were here in person, we would have given you a token of appreciation and that trophy as well. But unfortunately, that's how we are connected so far. The team Murtafiya, Basla, and Asma, thank you so much for inviting us. And we look forward that this series will going to continue till the time things will going to go back to the normal, because this is the way that we can impart learning and development by leveraging digital platforms. All the participants who have joined us so far and who have left because they have some other meetings as well, aap sabka shukriya. So ladies and gentlemen, here we are wrapping up today's session. It was a pleasure meeting, interacting all of you, and looking forward to see you on some other intervention as well. So thank you. thank you.
Thank you.